Good morning students. I hope you all are well. So student, last day we have discussed about how to create the statement in Python. So today I am just demonstrating it with the practical. So let's see, have a practical question or a practical problem in which I am taking three numbers as input and just finding a particular calculation over there. ठीक है. सो चलिए हम थ्री नंबर्स को इनपुट लेके उनका एडिशन करवाने वाले हैं आज. So for that, as we are just taking the input from user, I am writing let three variable num1, let short it n1 is equals to int, obviously just because of we need to take the calculation over there. So input, and I am writing a simple message that is informative, enter first number. Okay बच्चों, तो ये क्या थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगेगा. एंड आई एम राइटिंग हियर द न्यू लाइन कैरेक्टर एज वेल, सो इट विल सेंड द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन, सो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ द second value and the third value. Okay, so for second value, you know that within a program we cannot copy the multiple variable with the same name. So I'm changing the variable name, so every value will get the different identity. Okay, here I am taking another variable in which I am just adding these three, like let s is equals to n1 plus n2 plus n3. So these are simple three numbers which I am taking from user and I am adding it, and the addition of these three numbers will be passes over to s variable. Okay, so I am printing a simple message that sum of numbers are is equals to whatever, as this message I want same as it is, so I am putting it into double pair of quotation, then separated by comma the value of s, because I want to print the value of s variable. Okay, so let's save this program first. On desktop I am saving it with the name of p1.py, as it is already there, so the code will replace the previous one. Okay, and I am just executing it by pressing run and run module, or directly you just enter F5 function 5 key. So it is asking the first number, let I am giving the first number as 10, second number 20, third number that is 30. So the sum of all the number is 60. ओके, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर है, इसको आप सेकंड कर लीजिएगा. ठीक है, और थर्ड नंबर को इस जगह पर मेंशन कर दीजिए. ओके बच्चों, लेट्स सी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, all three numbers are added. Okay बच्चों, this is very simple program. Here I have adding three numbers. I am taking the three numbers from user. Let I am doing another program in which I am getting the length and breadth of a rectangle from user. Okay, and that will be calculating the area of that rectangle. So for that, enter length of rectangle. I am passing a particular message. I enter the length of rectangle. Second, enter the breadth. Of rectangle. Okay. As बच्चों, many times we have seen that the area may be in the decimal. So obviously I am writing here float value, because I need to take the input as an integer, that floating point value, also known as decimal value. So the n1 and n2 will contain decimal part of values. Now to just get the area, I am having a variable area. In that I am just applying the area formula of rectangle, that is L into B, and we know that our length is in which variable, that is n1, and breadth is in n2. So the formula will be length n1
multiply by n2. Okay, and I'm printing and giving the output as area of rectangle is value of area. Okay, separated by comma. Let's see how it works. F5, as I'm giving here, the length is 10.5, length is 10.5, enter the breadth is let 10, so the area will be 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप चाहें तो यूनिट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप इसको थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं जिससे कि आपका प्रोग्राम रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों. जैसे एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रैकेट में आप यहाँ मेंशन कर दीजिए इन सेंटीमीटर. ओके, सिमिलर मैसेज यू विल जस्ट पास इन नेक्स्ट इनपुट एज वेल, सो इट गिव्स और एनहांस द रीडेबिलिटी. ओके, और एरिया जब आपका प्रिंट हो जाएगा तो आप यहाँ पे डबल पेयर ऑफ कोटेशन के अंदर स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से प्रिंट कर दें. ठीक है, तो इट लुक्स नाइस. देखिए, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर, लेट आई एम राइटिंग 10.5. रेक्टेंगल की ब्रेथ इज इन सेंटीमीटर, लेट 10. द आंसर इज 105 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके बच्चों, very simple program. I have given you in last that class. I hope आप लोगों ने किए होंगे. Now एक और प्रोग्राम देखते हैं बच्चों. To find the square or a cube of any number. ठीक है, means finding the exponent. So for that let enter the particular number, एंटर बेस नंबर. ठीक है, जिसका आपको क्यूब या स्क्वायर वटेवर जो भी निकालना है. इस नंबर को मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है, दैट इज़ n1. एंड नाउ मुझे सपोज करो क्यूब निकालना है बच्चों, तो n1 को मैं कितने टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट कर दूंगा विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ओके, एंड आई एम हियर राइटिंग क्यूब ऑफ गिवन number is comma and value of variable मैंने ले लेता हूँ एरिया को हटा के, let a. so if I am writing a here, so the a contains what, that value जिसके अंदर आपकी cube value stored है. so I am printing it. enter the base number, let 50. so the cube of 50 is 125,000. Understand? So such simple program we have prepared. In that we have used input function, output function, that is print function, or converting a particular string value into integer and float. So बच्चों प्रैक्टिस करिएगा इसकी. Thank you.